अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों का पेपर 1 बहुत अच्छा सा हो गया होगा उन स्टूडेंट्स का जिनका एग्जाम हुआ था 6 जैन 2024 को। राइट, अब हम लोग उसके आंसर्स को टैली कर लेते हैं। नंबर 1, which one of the following regions of spinal cord consists of 5 bones fused into each other to form single bone shape? तो आप लोग कहते हो आंसर इज lumbar region. Right? Which one of the following extends from stomach to ileocecal junction as small intestine? Right? Then, which one of the following extends from the end of the ileum and ends up in the anus? That is large intestine. Which one of the following is a series of tubular portion present in the cytoplasm? It is also endoplasmic reticulum. Right? Then, it is a J-shaped organ. It is 10 inches in length. Is called stomach. ठीक हो गया? The number of total vertebrae is 33. ठीक हो गया? Then the number of cervical vertebrae is 7. Which one of the following branches of anatomy deals with microscopic structure of tissues? Is histology. Which one of the following branches of anatomy deals with the structure of using CT scan and MRI? Is radiological. Basic structural and functional units of kidney is known as nephron. Right? Then, vocal cords lie in which of following parts of body? Is larynx. Branch of anatomy that deals with the study of diagnosis of disease is called applied anatomy. Which is the large bone of leg that bears whole body weight? Is tibia. Which one is also known as kneecap? Is patella. Kidney are located in which one of the following region? Is lumbar region. Which one of the following is responsible for the passage of ions and molecules outside of the cell? Is cell membrane. Right? Which one of the following contains the suspended salts, sugars, enzymes, and organelles? Is cytoplasm. Which one of the following microscopic features possesses the characteristic lamellar structures? Is bone tissues. Which one of the following allow the movements of flexion and extension only? Is hinge joints. Then, which of the following values represent the amount of partial pressure of carbon dioxide, pulmonary blood, and in the alveolus respectively? Is 45 millimeter mercury and 40 millimeter mercury. Which one of the following underlying layers of the fatty tissue that separates the skin from muscle of body wall? Is dermis. Which one of the following is not the component of pulmonary circulation? Is left ventricle. Which one of the following do not contain mitochondria and nucleus? Is mature RBCs. Which one of the following is the correct amount of diurnal variation in the level of RBC in normal physiological state? Is 0.5%. Only 5%. In which the type of anemia, the RBCs, WBCs, and platelets count are decreased due to bone marrow congenital defect? Is aplastic anemia. Which one of the following is treated using folic acid? Megaloblastic anemia. Which one of the following is the maximum pressure exerted by the blood on the walls of blood vessels which develops at the peak of ventricular systole? Is systolic blood pressure. Right. Which gland excrete oil to lubricate and maintain the health of the human's skin? Is sebaceous glands. Emulsification is very important for digestion of fats. Which hormone is secreted by the alpha cells of the islets of Langerhans of the pancreas? Is glucagon. Which one of the following is pear-shaped organ?
and is 7 to 10 centimeter long and 3 centimeter broad. It is gallbladder. Which one of the following is not the cause of bleeding? It is deficiency of white blood cells. What is the function of blood platelets? As aid in coagulation of blood. Which one of the following enzymes which present in saliva? So amylase is present in saliva. Which one of the following is the good cholesterol? HDL. हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो होती हैं वो गुड कोलेस्ट्रॉल होती हैं. Complete the given equation. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इनटू क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. और ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी. Which one of the following is a secretion of human skin having waxes? It helps skin to be moist and flexible. It is sebum. Which one of the following is overall three-dimensional shape for proteins? As tertiary structure. Which one of the following is insoluble in water but soluble in dilute salt solutions and are heat coagulable to a variable extent? Is lactoglobulin. Which one of the following do not take part in protein synthesis but many of them play important role in the body? Is ornithine. Which one of the following is known as powerhouse of cell? So mitochondria is known as a powerhouse of the cell. Which one of the following is involved in the protein synthesis? It's ribosomes. From which one of the following the growth hormone is released? So pituitary gland. From pituitary gland. From which one of the following the calcitonin is released? It's thyroid gland. Which microorganism is in debate that it's living or non-living? It's viruses. क्योंकि ये अपने होस्ट से बाहर होते हैं तो नॉन लिविंग होते हैं, होस्ट के अंदर जाते हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म यूज करके लिविंग हो जाते हैं. Which one of the following is involved in the reception of signals from other cells? It's cell membrane. What do we call the region where the soil and roots make contact? It's rhizopus. Which one of the following techniques is used to carry out the sterilization of heat sensitive substances? It's moist heat. Which one of the following is a single celled algae which has a cell wall of silica? It's diatoms. Which one of the following process used to sanitize medical and other hazardous waste before it is discarded with non-hazardous waste? It's incineration. Which one of the following terms is alternatively used for plasmids? It's R factor. ठीक हो गया. Which one of the following is the primary function of flagella? It's movement. Which one of the following techniques enables detailed internal structure study of the cell? Is scanning electron microscopy. Which one of the following is an example of gram-negative bacteria? Is E. coli. Which one of the following contain chloroplast? Is algae. Microorganisms found naturally in fresh and salt water includes all of above. Bacteria and cyanobacteria, protozoa and algae, and rotifers. Right. Spherical shaped bacteria are known as cocci. Cell wall of fungi is made up of chitin. Standard temperature used in autoclave for sterilization is 121 degree centigrade. Right. यहाँ तक कि आप लोगों के एमसीक्यूज थे. आई होप कि आप लोगों ने चेक करके आपको आइडिया हो गया होगा कि आप लोगों के कितने एमसीक्यूज ठीक हुए हैं और कितने गलत हुए हैं. अगर किसी के 50 से अबव मार्क्स हैं देन काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. अब हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं. आप लोगों के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस आए थे बहुत ही इजी थे, आपके सारे कोर्स के अंदर से थे. एज फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हो ब्रीफली एक्सप्लेन ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन स्कल, आपके एनाटमी का था. राइट अ नोट ऑन एनाटमी
ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये बहुत दफ़ा पास पेपर में आ चुका है। एक्सप्लेन ब्रीफली एनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी बहुत दफ़ा पास्ट पेपर्स में आ चुका है। राइट डाउन एटलीस्ट 5 कॉजेज ऑफ पर्नीशियस एनीमिया एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया ईच, दोनों की आप लोगों ने 5 डेफिशिएंसीज लिखनी थी, ठीक है। राइट डाउन द नेम्स ऑफ लेयर्स ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स, आपके फिजियोलॉजी में से आ गया। एक्सप्लेन पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव अलॉन्ग विद डायग्राम, ये भी आपके फिजियोलॉजी में से था। राइट ए नोट ऑन ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेविंग आपके माइक्रोबायोलॉजी का आ गया, स्टेरिलाइजेशन में से। राइट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, बहुत ही आसान सा, आप इसके अंदर वायरस के बारे में मीन स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन करते, वायरस की डेफिनेशन लिखते, ठीक है। आप लोग इसको इजीली इसमें आप लोग मार्क्स हासिल कर सकते हो। व्हाट आर हाइपोथेसिस अबाउट द ओरिजिन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत इजी सा। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। आप लोगों ने मीन फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, उनकी बेस पे आपने उसको क्लासिफाई करना था, एनलिस्ट करना था, एक्सप्लेन करना चाहते तो उससे आप लोगों को फ्री में मार्क्स मिल जाते। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन, ऑल्सो एंडेज द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, सो एंजाइम रिएक्शन भी आप लोग पढ़ चुके हो, आपने फार्माकोग्नोसी में भी पढ़ा है और आप लोगों ने यहाँ पे भी पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री में, और इवन आपने प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हैं, उसकी डेफिनेशन भी पढ़ी है। देन ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग, नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या है, एपो एंजाइम, विटामिन के टॉक्सिसिटी और बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे सारे आप लोगों के छोटी छोटी सी डेफिनेशंस बायोकेमिस्ट्री में से आ गई। आई होप कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और आप लोगों ने मीन अपने मार्क्स जो हैं सम अप कर लिए होंगे और आप लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।